Okay, so today we are doing LPP to solve it by graphically. Okay, so you can see in objective function that two variables x1 and x2, which is known as decision variables, whose value we have to find out by graphical method. Okay, so we are going to find out value of x1 and x2 using graphical method. So minimize thing is also there. Okay, subject to the constraints, these inequalities are called as constraints, and this is the non-negative restriction on the decision variables. Now, do you know how do we solve LPP by graphical method? How do we solve it by graphically? So I'll tell you students, हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ किसका प्लॉट होता है? ये तीन चीजें ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. तो हम ग्राफ किसका सॉल्व करेंगे? इसको कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, किसका ग्राफ ड्रॉ करने का? कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ ड्रॉ करने का. So what I have to do? So these are two inequalities. ये दो inequality को हम क्या करेंगे? पहले equality में convert करेंगे. So step 1, convert the inequality into equality. Convert the inequality. Convert the inequality into equality. So what I will get then? So first equation would be, so 2x1 plus 3x2 is equals to 30. So this is the first equation. So this was an inequality. When you this, because of this sign, no, this is called as inequality. When we convert this inequality into equality, that means equal to sign आएगा. So equal to sign आता है तो वो क्या हो जाता है हमारा first equation. Then second क्या हो जाएगा फिर? Second inequality will become 3x1 plus 2x2 is equals to 12. So this is your second equation. This is understood? क्या किया हमने? inequality को just equality में convert किया है. So we got two equations. Now इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. And now look at the first equation. Equation number 1. ये क्या represent करता है? सर जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा ग्राफ? Will it be a straight line or parabola or circle or what it is? What do you think? वो जो equation है वो equation क्या represent करता है? उसका डायग्राम कैसा आएगा? पैराबोला. पैराबोला, वेरी गुड. पैराबोला का इक्वेशन पता है तुमको? Well, this would be a straight line. Why it is a straight line? This equation represent equation of a straight line. अभी कैसे देखो दो वेरिएबल है, ठीक है. अब दोनों वेरिएबल का पावर कितना है? 1. So it is a linear equation. linear equation का ग्राफ क्या रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. Got it? Whoever has answered parabola, parabola का इक्वेशन में एक वेरिएबल का डिग्री 1 रहता है और दूसरे वेरिएबल का डिग्री 2 रहता है. So this is not a parabola, this is a straight line. कैसे आइडेंटिफाई करने का? दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1 है. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? डिग्री क्या होता है? 1 होता है. तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. सो दूसरे ग्राफ का भी दूसरा इक्वेशन का भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. नाउ यू अंडरस्टूड? यस, नो? कुछ बोलोगे स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करने का? तो आई जस्ट ड्रॉ दी I'll just consider the first equation. Consider equation 1. So equation 1 क्या आपका? 2x1 plus 3x2 is equals to 13. Now अभी मैंने आपको बताया कि it is representing a straight line. तो कोई भी straight line को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स लगते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी straight line को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स लगेंगे? Very difficult ना? 3 पॉइंट्स लगेंगे. 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं होंगे? दो. अच्छा. No. Okay, ma'am. When you draw any straight line, you need only 2 points, no? Like एक इधर हो गया, एक इधर हो गया. Draw them. It is a line. It is a straight line. So you need 2 points to draw a straight line. So what those points I'm going to find out? I'm going to find out the x-intercept and the y-intercept. x-intercept का मतलब क्या होता है कि हमारा जो straight line है वो x axis पे किधर कट कर रहा है, और y-intercept मतलब क्या? हमारा जो straight line है वो y axis पे किधर कट करेगा. Is it clear? x-intercept and y-intercept क्या होता है?
Yes, ma'am. ओके, सो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या? एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? 0. 0 होता है, राइट? सो बेसिकली फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या? पहले तो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? पुट x2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, y कोऑर्डिनेट इधर हमारे क्या हो गया? x2. सो x2 इक्वल्स टू 0 पुट करने का तो व्हाट आई विल गेट? 2x1 इज इक्वल्स टू 13. सो x1 कितना आ जाएगा हमारा? x1 will become 13 upon 2 which is 6.5. सो हमारा पहला पॉइंट क्या मिला? पहला पॉइंट मिला हमारा x1 का x1 का वैल्यू पहले लिखने का, दैट इज योर x एक्सिस. तो 6.5, 0, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. Similarly, you can find out the second point. Second point के लिए क्या करोगे? Put x1 equals to 0. That means ये तो हो गया x इंटरसेप्ट. नो, अभी y इंटरसेप्ट निकाल रहे. y इंटरसेप्ट पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. सो अगर x1 equals to 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो what I will get? 3x2 equals to 13. तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? 13 upon 3. एंड 13 upon 3 कितना होता है? 3 4s are 12.33. 4.33 will come. Am I right? Yes, ma'am. All right, so this is how we draw a straight line. तो हमने क्या किया? पहले I'll repeat again. Okay, what I did, I converted my constraints. हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? constraints का. constraints पे inequality रहती है, your task is to convert them into equality. So you'll get two equations. दोनों equation क्या represent करते हैं? straight line. और straight line को draw करने के लिए you need at least 2 points. तो 2 points हम क्या निकालते हैं? y intercept and x intercept. एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे किधर कट कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या? वाई एक्सिस पे किधर कट कर रहा है? तो पहले x2 इक्वल्स टू 0 पुट करने का, फिर x1 0 पुट करने का. Similarly you are going to consider equation number 2. so equation number 2 क्या है हमारा? 10. अब जल्दी से बताओ x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा? सो फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे हम? क्या 0 पुट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट? x1. पुट व्हाट? x इंटरसेप्ट मतलब x1 निकालना है तो x2 x is equal to Sorry, 0. sorry. 0. x2 is Yes. equals to 0. x2 equals to 0 put करेंगे to get the value of x intercept. Okay, so it will become 3x1 equals to 12. So x1 कितना हो जाएगा? 4. So 4. point क्या मिलेगा आपको? Point क्या मिलेगा? 4,0. Now put, अभी क्या put करेंगे? x1 x1 is is equal to 0. Yes, put x1 equals to 0. Therefore I will get 2x2 equals to 12. So x2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 6. तो second point क्या मिलेगा हमें? 0,6. 6. इधर तो लिखा नहीं, इधर पॉइंट क्या मिलेगा हमें? 0,4.33. तो बस सारे पॉइंट्स मिल गए. अभी ना यू हैव टू प्लॉट देम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी ऑन एक्स वाई प्लेन. सो आपके 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये रहा आपका पहला पॉइंट. दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट. ये चारों पॉइंट्स को हमको प्लॉट करने हैं एक्स वाई प्लेन पे. सो आई जस्ट ड्रॉ एक्स वाई प्लेन. So this is my y axis. This is my x axis. All right. So this is called x axis. This is called y axis. Now we need to define scale. Scale define करना जरूरी है because x axis पे आप क्या ले रहे हो और y axis पे कितना scale ले रहे हो. So that you need to define. So on x axis, on y axis, you must be knowing all this. ठीक है. सो ये एक्स एक्सिस पे स्केल क्या लेना है, वाई एक्सिस पे स्केल क्या लेना है, वो उसके लिए पहले देखो. अभी देखो एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट कितना है? ये 6.5 है, ये 0 है, देन 4 है. ओके, सो हाईएस्ट कितना जा रहा है? 6.5. सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेक? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. कैन आई से दैट? 1 Yes, सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस. नाउ वाई एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है? 6 जा रहा है. तो इस पे भी हम क्या ले 6. सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. 1. ठीक है. सो 1 के डिस्टेंस में प्लॉट करेंगे. सो ये हो गया 1, देन 2, देन 3. आप लोग प्रॉपर स्केलिंग लेके प्लॉट करने का. ठीक है. 5, देन 6. 6 इज द हाईएस्ट पॉइंट. एंड इधर भी हम क्या प्लॉट करेंगे? 1, देन 2, देन 3, 4,
5 and 6 is the highest point on y axis. ठीक है, सब प्लॉट हो गया पॉइंट्स. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट पॉइंट लिखो. पहला इक्वेशन, ये इसके पॉइंट पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट्स प्लॉट करते. तो पहला 6.5, 0 एंड देन 4.33 है. सॉरी 6.5 है ना ऑन एक्स एक्सिस. 6.5 6.5 किधर आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा ना. सो दिस इज गोइंग टू बी योर, this is going to be your 6.5, 0. All right, तो ये हो गया हमारा 6.5, 0. The second point is 0,4.33. 0,4.33. This is going to come on y-axis. So 0.433 will be somewhere over here. This is your 0,4.33. दोनों points plot कर लिए. Now what you have to do, you have to join them. I will just join them. ठीक है, is this fine? So ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसका आपको इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा. इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन का, 2x1 plus 3x2 equals to 13. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन. सबको समझा ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है? एनी क्वेरी, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, नाउ सेकंड वन ड्रॉ करते हैं. सेकंड इक्वेशन मतलब ये पॉइंट 4,0 and 0,6. लेट अस प्लॉट देम. 4,0, 4,0 मतलब दिस पॉइंट, दिस इज अ 4,0 and 6, 0,6. So 0,6 is over here. What you have to do, you have to connect these two points. So I'll just connect it. तो ये हो गया हमारे दो पॉइंट्स कनेक्ट. तो ये इक्वेशन का भी हम ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे. 3x1 plus 2x2 equals to 3x1 plus 2x2 equals to 12. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लाइन हो गया. सब ड्रॉ करके हो गया. नाउ अभी पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइन, सॉरी यू नीड टू ड्रॉ दी कॉमन रीजन. कॉमन रीजन किधर आएगा? आई जस्ट हाईलाइट दिस लव बॉक्स. सो यू नीड टू ड्रॉ द कॉमन रीजन. कॉमन रीजन किधर आ रहा है? अभी जो पहला इनइक्वालिटी था, कंस्ट्रेंट देखो जरा स्टूडेंट्स. कंस्ट्रेंट्स, हमारा कंस्ट्रेंट क्या था एग्जैक्टली? our constraint was this: 2x1 plus 3x2 is less than equals to 13, is less than equals to 13. पहला इक्वेशन, पहला स्ट्रेट लाइन किधर है? ये रहा हमारा पहला स्ट्रेट लाइन. तो बोल रहा है कि the constraint is having 2x1 plus 3x2 is less than equals to 13. ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वो इक्वल्स टू 13 वाला स्ट्रेट लाइन है. सो लेस देन किधर आएगा? लेस देन इक्वल्स टू 13 किधर आएगा? ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया दैट इज ऑफ इक्वल्स टू लेस देन 13, इक्वल टू लेस देन 13, इक्वल्स टू 13 वाला लाइन है. एंड हमारा जो कंस्ट्रेंट है उस पे लेस देन इक्वल्स टू है. सो हमारा जो कॉमन रीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द ओरिजिन. आर यू अंडरस्टैंडिंग कॉमन रीजन कैसे निकालोगे आप स्टूडेंट्स? पे अटेंशन. ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 13 वाला, बट हमारा कंस्ट्रेंट जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 13. सो ये जो लेस देन इक्वल्स टू 13 क्या होगा? इसके अंदर वाला पार्ट. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 होता तो उसका बाहर वाला पार्ट आप लेते थे. अंडरस्टैंडिंग किड्स? Yes, ma'am. ओके, सो कॉमन रीजन जो रहेगा दैट कॉमन रीजन आई जस्ट हाईलाइट. सो हमारा जो कॉमन रीजन है पहले लाइन का दैट इज गोइंग टू बी द रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन. सो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन जो है हमारा, बिकॉज हमारा जो कंस्ट्रेंट था दैट वाज लेस देन इक्वल्स टू 30 और लेस देन इक्वल्स टू 13 किधर आएगा? इट इज गोइंग टू बी ऑन दिस साइड ओनली. सो आई जस्ट हाईलाइट इट फर्स्ट. और कॉमन रीजन फाइंड आउट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हम वर्क करते हैं. ऑलराइट, just draw it properly. So this is entire your common region. ये पार्ट भी आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? दिस पार्ट इज आल्सो गोइंग टू कम नो, बिकॉज हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन का इनसाइड पार्ट हमें कंसीडर करना. So this is also going to come under your
Is this understood to everyone? Like, how did I draw this region? Any query, any doubt to anybody? No, ma'am. Okay, so is this understood कि ये region कैसे आया हमें? So हमारा जो region, हमारा जो constraint था, that was less than equals to 13 वाला region it was, ठीक है? So that is why तो ये जो line है that is equals to 13 वाला line है, तो less than वाला क्या रहेगा towards the origin. Now we'll draw the second line का region. Second line में भी क्या है? Second line में भी क्या है? 3x1 plus 2x2 less than equals to 12. Can you see where is the second equation? ये रहा. तो इसमें भी constraint में क्या है? Less than equals to 12 है. तो ये जो लाइन ड्रॉ किया हमने that is of equals to 12. So less than वाला रीजन किधर रहेगा? लेस देन वाला रीजन किधर रहेगा फिर? लेस देन वाला रीजन किधर रहेगा? ये जो लाइन है सेकंड लाइन पर भी, ये रहा आपका सेकंड लाइन, ठीक है? Left side. लेस देन तो टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड ओनली, नो? Yes, ma'am. इसलिए मैं स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? सो टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड ही रहने वाला है। ये सेकंड, और ये व्हाई एम आई restricting it to first quadrant only? Why am I restricting it to first quadrant only? Because हमारा जो decision variable था that was x1, x2 is greater than or equal to 0. x1 and x2, मतलब x coordinate and y coordinate both are what greater than equals to 0, और दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किधर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो आपका जो रीजन रहेगा that is going to lie in first quadrant only. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर ना सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो जो आपको जो कॉमन रीजन रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज ऑफ द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. अब बताओ कॉमन रीजन क्या हो रहा है? व्हाट इज द कॉमन रीजन? कॉमन रीजन तो दोनों ही लाइन का क्या रहे? कॉमन रहे. सो टेल मी, एक सेकंड कोई और कल यूज करो. टेल मी, इज दिस अ कॉमन रीजन? No, ma'am. Why no? That's the common These region are of the- only one line, right? No, Yes, ma'am. it's the common region of Yes. Is this a common region? No. No, ma'am. No. Why? Because that is there a is common one region line. of only one line. दोनों का जो common region होगा that is which line? This part. कौन सा होगा? ये part जो हमारा क्या है वो, तो ये highlight नहीं होगा. So this is going to be a corner point. So this is the first and second, और इसके corner points को हमको क्या करना पड़ेगा? Highlight करना पड़ेगा. So okay, whose mic is on? Please put it off. Afan Sheikh. Thank you. Sorry, ma'am. Sorry. या कोई बात नहीं. So ये हो गया हमारे corner points जिसको हम highlight कर रहे हैं, ठीक है? So I'll just make it. ये हो गया हमारा O, then this is A, then this is B, and this is C. So this is your common region. So ये common region के points हम लेके इस पे काम करेंगे and we'll find out the optimal solution क्या है. So therefore the common feasible region is, क्यों इतना छोटा दिख रहा है? Therefore the common feasible region, okay, I should be mentioning that this is feasible region. Okay, the common feasible region is, नाम क्या है हमारे common feasible region का? O, A, B, C. So this is a common feasible region. So इसी के corner points में हमें क्या करना पड़ेगा? Work करना पड़ेगा. So what I'm going to do, I'll just write down corner points on one column and हमारा जो था Z हमारा क्या था? What was your Z? Z किधर है हमारा Z? Z किधर है? Can you see? 5x1 plus 7x2. 7x. So 5x1 plus 7x2. So just write over here 5x1 plus 7x2. इसे हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है. So हमें ऐसा x1 और x2 ढूंढना है जो हमें इसको मिनिमाइज करे. So let us see. So first point, corner point क्या हमारा? O. उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0. A का कोऑर्डिनेट पता चल रहा है क्या आपको? A का कोऑर्डिनेट can you see where is A? 4,0, right?
So I'll just write on 4, 0. And then B के coordinate लिखेंगे and C के coordinate लिखेंगे. B का coordinate क्या है? B के coordinate से नहीं पता Now चल for रहा. me in C. my graph paper, I'm getting 2.1, 2.9. Okay. Now that way can also be done. अगर आप roughly draw कर रहे हो, suppose अगर ग्राफ पेपर नहीं रहा और अपने ये आंसर शीट के पेज पे ही ड्रॉ किया है, तो बी कैसे निकालोगे? सो स्टूडेंट्स बी कैसे निकालोगे? प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही काम आएगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो बी. ये जो बी है दैट इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस. डू यू एग्री विथ मी? Yes, ma'am. यस. तो ये जो पॉइंट बी है दैट इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस. तो ये दो लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करो साइमल्टेनियसली एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. अंडरस्टूड? सो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड आपको बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. और बताओ मुझे बी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है. ठीक है, solve it quickly and tell me what is the value, what are the coordinates of b. and c का तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल रहा है, आई थिंक 0,4.33 है. 0,4.33. Yes, students, are you getting the coordinates for b? Anybody got coordinates for b? X1 as 2. X1 you got 2. Okay, right. And the other coordinate is 3. 2,3. That's absolutely right. So this is 2,3. Now what you have मैम to तो do, kids? मैम एक डाउट है. Yes, बोलो. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा वो अपन डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल मैम ग्राफ बताना एक्चुअली. ग्राफ पेपर में yes, मैंने बोला नहीं, it हाँ, is easily to 2, make out 3 over डायरेक्ट. there. It's easy to make out there. But what about when you draw roughly? आप लोगों की आदत होती है वो, if you don't take proper scaling and all. वैसे तो I can get from here also, you know, कि ये जो intersecting point है उसका x coordinate 2 है और y coordinate क्या 3 है. But sometimes to be very sure, you should solve it simultaneously. Which means that I'm getting approximated in the graph paper. That's what. So when you solve the two equations simultaneously, तो you be sure, you know, कि नहीं यही points होने वाले हैं, ठीक है? All right. So we got all the 4 corner points, and we are going to put it in this objective function, and to see on which point I'm getting the optimal solution. Okay. So when I will put this is x1 का value 0 and y का value 0, so 0 put किया तो I'll get 0 only, so there's no point. And a का value put करते हैं. A का value is 4 and b, जो a के coordinates है that is 4,0, that is x1 का value you have to put 4 and x2 का value you have to put 0. So what I will get? So 5 into 4 plus 7 into 0. How much it is? 5 into 4 is 20 plus 3. दूसरा क्या हो जाएगा? 5 into 2 plus 7 into 3. So 21 plus 10, 31. And then C. So 5 into 0 plus 7 into 4.33. What you're getting? 30.31. 30.31. 31. So 30.31. Okay. Oh, sorry. The question में हम changes करेंगे. The question is not minimization. The question is on maximization. It is a question on maximization.
Now you have to see on which corner points are getting the maximum value. कौन से point पे हमें maximum value मिल रहा है? 0 is it maximum? No. 20 is it maximum? No. 30 is it maximum? No. I can see the maximum over here is 31 and 31 किस पे मिल रहा है? 2,3 पे मिल रहा है. Okay. Now since z equals to 31 is the maximum value at 2,3. So x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 and x2 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 3. So at this point you're getting the maximum value of z, that is going to be your optimal solution. I hope you all have understood this problem. कि how do we draw the graph and how do we get the corner points. अगर कोई corner points missing है तो कैसे इसको आप find out कर सकते हो by solving the equation simultaneously. Any query, any doubt you have in this? कुछ भी है तो पूछ लो before I give you the second question to do on your own. So what we did, we draw the graph of constants, we convert the inequality into equality, then we get a straight line and we then draw the straight line by finding the x-intercept and y-intercept. And then we plot them on a graph and we draw the common region. Common region कैसे निकालना है, draw करना है, that is understood to everybody. उसी में ही students को query आता है, like how did you get the common region? चलो I'm giving all the next question, उसका graph draw करके बताओ मुझे ये graph कितना कैसा आता है, and you can send me on WhatsApp so that I'll check your graph. Okay, so I'll just start on question number 2. Solve graphically. Then we will take one word problem. So solve graphically. The problem is maximize z is equals to maximize z equals to 10x1 plus 15x2 subject to the constraint 2x1 plus x2 is less than or equals to 26. Then next one is 2x1 plus 4x2 is less than or equals to 56. And x2 minus x1 is less than or equals to 5. And the non-negative restriction on x1 and x2. Can you all do this problem? Can you all draw the graph of this? Okay, I'm giving you all 4 minutes. Draw the graph and tell me what you're getting. You can send me on WhatsApp your graph, okay, and I'll check that. Are you all drawing the graph of it? Hello. Solving the equations. All right. Okay.
Okay, did you all get the points? So what we can do this way also. So I'll write equation and then point 1. How do we get that? So students, you have got 3 questions, so you'll be getting 6 points, 2 for each. So we'll find out x1 intercept and x2 intercept for each of the equation. So what I'm going to get, so x1 intercept क्या हो जाएगा, x1 intercept के लिए y coordinate क्या रहेगा, 0 रहेगा. So what I will get है 13,0 आएगा ना ये point. Yes, ma'am. And x2 intercept मतलब क्या, x1 will be 0 और ये क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा. Alright, दूसरा बताओ, दूसरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा. This way you can do directly, okay. I think 28,0 आएगा if I'm not wrong. ये 0, 56/4 कितना होता है? I think 14. Are you also getting the same coordinates? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, so 5,0 Ma'am. हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, -5 हो जाएगा. No. Did I do? Okay, I think ये minus होगा, तो ये plus होगा. -5,0 and 0, Yes, 5. correct. Now what do you have to do? You know, you just look at the x coordinate and y coordinate, and you tell me what the scale I should be taking. So in this, we are going to draw the graph. So tell me the scale which I should be taking for this particular question. Highest कितना जा रहा है? 1 centimeter is equal to 1 unit. 1 centimeter equals to 1 unit. And on y-axis, no, I should, okay. I can see, there's 13, 28, -5, no? So 1 centimeter, I should be taking as, you can take 2 units. Can I take 2 units? That would be better, no? 28 Like is, 0, 2, 4. yeah, फिर I should be in the taking graph. 4 or I should be taking 5. What do you say? I'll take 5 so that my graph will not go longer. On y-axis, 1 centimeter equals to 26 is the highest point on this. So here also I will take 5 minutes. Okay, you can take lesser also, but I have taken 5 because
So Oh that in God, the lesser space. graph it should be like 0, 5, 10. Yes, yes, right, right. So this is your x-axis, this is my y-axis. I hope all the points are gonna come on this. So I'll just plot a x1 axis and this is your x2 axis. So this is 0, 0. Next point would be 5, then 10, then 15, then 20, 25, and this would be 30. So yeah, and the same will go on y-axis also. 5, 10, 15, 20, 25, and here is 30. Now you have to join them. First equation, 13, 0 and 0, 26. 13, 0 will come over here. This is the 13, 0. All right. So this is the 13, 0. And the next point is 0, 26. 0, 26 will come over here. 0, 26. Now, दोनों points हमें plot कर देना. You have to connect them. So this is your first line. And you have to write down the equation also. Equation is 2x1 plus x2 equals to 2x1 plus x2 is equals to 26. This is the first equation. Now next. 28, 0, 0, 14. 28, 0, where are you going to plot? 28, 0. Where it is going to come? 28, 0. X-axis. On x-axis after 25th, right? So 28 is there. So 28, I think it is going to be closer to 30. So this is a 28, 0. And the next is 0, 14. So 0, 14 will be closer to 15. So now you have to join them. So ये हो गया हमारा second one. All right. So write down the equation of this also, which is 2x1 plus 4x2. 2x1 plus 4x2 equals to 56. Now the third equation. Minus 5, 0, 0, 5. Minus 5, 0. I think somewhere here it is. Right? No? Minus 5, 0. Negative x-axis side. And 0, 5. 0, 5 is over here. Now you connect them. So this is your third line. So equation क्या था? x2 minus x1 is equals to 5. Now tell me, what do you think? Where is the common region? Is it going to be this? Is it going to be this? The one which is I'm highlighting now? Is it going to be that? क्या ये common region हो सकता है क्या students? ये common region हो सकता है? Hello. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. My question is that can this be a common region? No, ma'am. Why? Only one line. Because of the Because non-negative restriction. All right. yes, ma'am. Because of the non-negative, because both the coordinates are positive, so both are positive in first quadrant, so this can never be in this quadrant. Okay. So common region, what do you think? Where it is going to be? मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बताओ ये कॉमन रीजन हो सकता है या नहीं. ठीक है. Can this be a common region or is it a common region? Is this a common region of all the three? We are having three lines. So क्या ये तीनों लाइन का common region इधर आ रहा है? Yes, no, काहीतरी बोला. Yes, ma'am. Yes. Now look at all the three lines. और तीनों की line में क्या थी? Less than equals to inequality was there. ठीक है. अब less than equals to मतलब क्या? Towards the origin वाला region. तीनों line का towards the origin वाला जा रहा है. So towards the origin मतलब क्या? तीनों का common region क्या हो जाएगा फिर तीनों line का? So this is जो मैंने अभी yellow color में जो highlight किया, that is going to be the common region of all the three lines.
आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है इसका भी इधर आएगा, ये जो लाइन है इसका भी इधर आएगा, ये जो लाइन है इसका भी इधर आएगा, इधर आएगा। सो तीनों लाइन का इंटरसेक्टिंग रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सो आई जस्ट मेंशन दैट दिस इज द विजिबल रीजन। So this is the visible region. All right, so I'll just make the ये हो गया ये point, corner points हमें लेने। So this is your corner, these are your corner points. All right, so I'll just highlight. This is O, this is A, this is B, C, and D. Do I know? Okay, so I'll just mention here the corner points and maximize Z. Z आपको maximize करना था, which was 10x1 plus 15x2. So पहला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट क्या मिला है, ओरिजिन विच इज 0,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या ए है, विच इज 13,0। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे अभी आप, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी यू कैन सी So बी the इज equations passing, I mean the lines. यस। सो बी जो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस दो लाइन को आप सॉल्व करोगे। किन दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन का। So ये दो लाइन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट फॉर बी। सी जो है वो कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सी आई थिंक ये रहा, ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सी के लिए आप ये दो लाइन क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर बी एंड सी। तो जरा बताओ बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, और डी का तो हमको पता है दैट इज 0,5। बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। Then you have to put these values in this z, and जिस पे भी हमें maximum value आएगा that is going to be your optimal solution. So ये तो I think 0 ही आता है, क्या आएगा 130। B और C निकालो, बताओ कितना आता है, ये आता है 15 5 सा 75। B और C आप निकालो। B आप निकालो, C का मैं बता देती हूँ कितना आता है। B is how much, kids? Anybody got the coordinate for B? X2 is 10. Yes. We'll find Yes, X1. right. Yes. I think 8,10 it is going to be. That's right. And this would be 0, G is 6, and C आपको आ जाएगा 6,11. All right. So हमें सारे coordinates मिल गए ना, you have to put it in this. So B के लिए हमारा Z का वैल्यू कितना आएगा, 10 into 8 plus 15 into 10 is how much? 150 plus 80, so 230 होता है ये। And for this 10 into 6 plus 15 into 11 कितना होगा ये, 165 plus 60, 235. Right, kids? Or have I done anything wrong? Okay, 25. So 60 plus 15 into 11 कितना होता है, 165, no? Just do the calculation and see is this right. 60 plus 15 into 11, 225 आएगा ना, 235 नहीं आएगा, 225. So maximum कौन से points पे मिल रहा है हमें, maximum is 230 and 230 किस पे आ रहा है, 8,11. Therefore maximum is Z equals to 230 at x1 equals to 8 and x2 is equals to 10. I hope this problem is understood to everybody, how to draw the graph. Any query, any doubt to anybody wants to ask anything? All right, so I'll share the attendance link in the chat box. You can fill the attendance. Bye everyone, take care.